Hello students, welcome back to our online classes with Best English School, and today we would like to start a new topic students, and the new topic is all about, you can see in your screen students. So in the previous video I have completed the chapter 1, right students? Let us know about the history. So now in this video we would like to start the second chapter of the subject social science students. So the second chapter name is Journey from Primitive Man to Settled Life. So in this video we will start a journey there would be a discussion from the journey of primitive man and the settled life students. So let's get started. Our subject social science, chapter number 2, Journey from Primitive Man to Settled Life students. So let me tell you about the primitive man first, and then how they have changed to the settled life. So students, the primitive man is all about that our you can say in your words, in a similar words, हमारे पूर्वज, our well wisher, those were the primitive man students, जो आदिवासी की तरह रहते थे. वो लोग one place to another place, they just went out in the search of food students. वो एक जगह पे कभी भी नहीं रहते थे. They have invented the fire students, and with the help of that invention we're able to do a lot of work with the help of that fire invention, right students? So the primitive men are those, they doesn't have their own home. They just went out from one place to another place in the search of food or having a very good shelter. So there was a journey between the primitive men to the settled life. So I have told you the primitive man once, right? So the primitive man was never able to stay in one place. मतलब वो हम कभी भी एक ही जगह पे नहीं रहते थे. But nowadays students, for example you, me and each of the person who is right now in staying, they all are staying a settled life. मतलब अभी हम लोग जो है लोग, वो अब हम लोग एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं स्टूडेंट्स. एक ही जगह पे रहकर हमारा खुद का घर है. वी कैन कुक ओवर देयर, वी कैन स्टे, वी कैन स्लीप, everything we can do on that path students, right? So now we are enjoying our life as a settled life students. So there was a journey from primitive man to the settled life, right? So that journey we will discuss it in this chapter students. Okay, so let's begin this one. I have already given you the introduction. Now we will go by the books textbook via. Okay students, so let's see it. Jasbir and his family were going from Gandhinagar to Jamnagar in train. Sitting near the window, he saw trees, bullock carts, camel carts, rickshaw, bus, tractor, and etc. He asked his uncle, when did this transportation start? His uncle put his hand on his back and said, train started in our country approximately 150 years back. Among all the vehicles which you are seeing on road, the bullock cart is oldest. Before it, thousands of years back, man did not have any means of transportation. He used to go from one place to another place on foot. So I have already told you students that the primitive man went from one place to another place, right? So there is one type of story in this line, is that there is a boy whose name is Jabir, and Jabir just went it out with his family from Gandhinagar to Jamnagar in train. मतलब जयबीर अपनी फैमिली के साथ गांधीनगर से जामनगर ट्रेन में जा रहा था, और वो विंडो के वहाँ पे बैठा हुआ था, विंडो साइड में बैठा था. तो वहाँ पे उसने बहुत सारे ट्रीज़ देखे, बुलक कार्ट्स देखे, कैमल कार्ट्स देखे, रिक्शा, बस, ट्रैक्टर, ऐसे बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन देखा उसने, जिसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं.
तो उसने अपने अंकल से पूछा कि ये सारे ट्रांसपोर्टेशन कब स्टार्ट हुआ है। तो उसके अंकल ने उसके बैक में कंधे में हाथ रखा और उसने बोला कि ट्रेन हमारे कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली 150 ईयर्स बैक चालू हुआ है, मतलब 150 साल पहले हमारे इंडिया में कंट्री में ट्रेन स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट्स। सो अमॉन्ग ऑल द व्हीकल्स विच यू आर सीइंग ऑन रोड, जो अभी आपने मतलब उसमें उसके अंकल ये बोलते कि जो तुमने अभी सारे व्हीकल्स देखे उसमें से सबसे ओल्डेस्ट बुलक कार्ट है, एंड दैट इज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एट दैट टाइम दैट वाज, एंड आफ्टर दैट बिफोर इट थाउजेंड ऑफ ईयर्स, मतलब उसके पहले ऐसा कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था ही नहीं। तो इसके वजह से जो पर्सन्स थे उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल के थ्रू ही जाना पड़ता था। दे जस्ट हैव टू गो बाय ओन फूट स्टूडेंट्स। ओके, सो नाउ वी विल सी द प्रिमिटिव मैन नोमैडिक लाइफ। सो प्रिमिटिव मैन नोमैडिक लाइफ, primitive man means people of very old time, approximately 20 lakh years ago. He led a nomadic life and spent his time by hunting. This stage of humans is called hunter and gatherers. He used to gather his food by hunting animals like deer, fishes and birds. Other than this, they collected roots and fruits on their food. सो स्टूडेंट्स व्हाट हैपन, द प्रिमिटिव मैन, जो ये प्रिमिटिव मैन जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, वो बहुत पुरानी बात है। मीन्स आप ये बोल सकते हो 20 लाख ईयर्स पुरानी बात है, जो जिस टाइम में प्रिमिटिव मैन अपनी नोमैडिक लाइफ जीते थे। मतलब वो लोग सिर्फ हंटिंग ही करते थे पूरा टाइम, जो अपना उनका टाइम था वो सिर्फ हंटिंग करने में ही निकाल देते थे। हंटिंग करेंगे तब जाके तो वो खाना आएगा और खाना फिर खाएंगे स्टूडेंट्स। तो दैट्स द रीज़न वो जो स्टेज था ह्यूमंस के, उसको क्या बोलते थे, हंटर एंड गैदरर्स बोलते थे उस टाइम में, क्योंकि वो लोग सारे एनिमल्स को गैदर करके, मतलब एक साथ गैदरिंग हो के वो एनिमल्स को हंट करते थे। कौन कौन एनिमल्स हो सकते थे उस टाइम, जैसे कि डियर, फिशेस एंड बर्ड्स. These type of animals they were hunted out, and when they collect all that, and other than they collected roots and fruits also for their food. मतलब वो रूट भी खाते थे और फ्रूट्स भी खाते थे, उनके खाने में वो चीज़ ये सब खाते थे स्टूडेंट्स. It was not that easy. Sometimes wild animals attacked them. Moreover, some of the animals were fast in running, so it was not easy for primitive men to catch them. Thus, primitive men used to wander from one place to another in search of food. Thus, he learned which fruits and roots to eat and which not to eat, as many of them were poisonous. Animals like deer, sheep, goat were easy to hunt, so primitive men used to wander from one place to another in search of them. Moreover, water being essential for life, they used to settle near the sources of water. So students, while the primitive man hunts the animal, it was not at all easy. That was a very tough task students, because समटाइम्स वाइल्ड एनिमल्स अटैक्ड मैंस, जो जंगली जानवर थे वो सारे मैंस में अटैक करने लग जाते थे, और उसमें से ऐसे बहुत सारे एनिमल्स तो ऐसे थे स्टूडेंट्स जो बहुत फास्ट रनिंग करते थे. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से लिपर्ड, राइट, लिपर्ड, टाइगर, these all were the fastest one, right? So that's why it was not at all easy for the primitive men to catch them. मतलब ये बहुत ज़्यादा easy नहीं था. तो इसके लिए ही प्रिमिटिव मैन एक जगह से दूसरी जगह जाते थे इन सर्च ऑफ फूड, एंड समटाइम्स एट दैट टाइम दे हैव लर्नड, उन्होंने ये सीखा स्टूडेंट्स कि कौन सा फ्रूट और रूट खाना चाहिए और कौन सा फ्रूट और रूट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ्रूट और रूट्स है जो पॉइजनस होते हैं, मतलब जहर होता है. पॉइजनस मीन्स जिसमें जहर हो सकता है और वो खाने से वो मर भी सकते हैं.
ऐसे भी एनिमल्स है जैसे कि डियर, शीप एंड गोट, ये बहुत इजी थे हंट करने के लिए, उनको मार के खाने में बहुत इजी था प्रिमिटिव मैन को। तो इन लोगों को ढूंढने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो लोग जाते थे इन सर्च ऑफ देम। एंड मोर ओवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वॉज दैट वाटर वॉज वेरी मच एसेंशियल फॉर लाइफ। जीने के लिए, अपनी लाइफ जीने के लिए पानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था स्टूडेंट्स। तो वेन एवर दे वॉन्टेड टू सेटल आउट, दे सेटल आउट नियर द वाटर। जब भी उनको 1 या 2 दिन के लिए सेटल होना था, रुकना था, तो वो हमेशा पानी के वहाँ पे ही रुकते थे स्टूडेंट्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी द प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। ओके, you can see in the screen over here clearly, properly. This is the textbook which I am reading you out. Okay, so the students who have their textbook, you should have to open your textbook. Okay, and you have to read it 1 or 2 times. Now let's start. Places of human habitation of primitive man in India. Archaeologists, anthropologists and historians have together found out many places of habitation of primitive men. Along with it, they have also found out information about implements used by them. So students, आर्कोलॉजिस्ट, आर्थ्रोपोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस, ये सारे जो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, इन्होंने ऐसे बहुत सारे प्लेसेस फाइंड आउट किए हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि प्रिमिटिव मैन वहाँ पे रहते थे। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिले हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि वो लोग उस टाइम में किस तरह से रहते थे और वो किस किस टाइप के वेपन्स यूज़ करते थे, जैसे कि स्टोन और वुड, वो ऐसे टाइप्स के वेपन्स यूज़ करते थे। आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो स्टूडेंट्स क्लियरली। समटाइम्स दे हैव इम्प्लीमेंट मेड ऑफ बोन्स, कभी कभी बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होती है, बोन्स होते हैं, उससे भी उन्होंने वेपन्स बनाए हैं, हथियार। वेपन्स क्या बोलते हैं हम लोग? वेपन्स उसको बोलते हैं, हथियार को बोलते हैं, जो हेल्प करता है कोई भी एनिमल्स को मार गिराने में स्टूडेंट्स। तो वो जो टाइम था, एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ वेडअप होते थे, तो वो लोग उस टाइम को क्या बोलते थे? पैलियोलिथिक बोलते थे स्टूडेंट्स। सो द स्टोन शोन इन फिगर 2.1 were used to cut vegetation and to scrape the skin of animals. Primitive man used peel of the tree and skin of animals to cover his body. So students, आप 2.1 पिक्चर में देख सकते हो, ये जो पिक्चर मैं आपको भी दिखा रही हूँ, यही सारे स्टोन्स वो लोग उस टाइम में यूज़ करते थे स्टूडेंट्स। ओके, ऐसे शेप के आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो आप इजीली देख सकते हो, ऐसे स्टोन वेपन्स वो लोग यूज़ करते थे, जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था कोई एनिमल को मार गिराने में, और उनके जो ट्री के जो पिल्स होते उसको निकालने में, और कभी एनिमल्स की जो स्किन होती है वो कवर करते थे अपनी बॉडी को, वो लोग कवर करते थे और वो पहनते थे अपने बॉडी में। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन इन इंडिया। मतलब इंडिया में प्रिमिटिव मैन किस तरह से रहते थे और उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे अपनी लाइफ जी है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल गो टू द नेक्स्ट वन of the next page of your textbook students. So students, you can see in this page map of stone age human habitation to India. आपकी टेक्स्ट बुक में ये मैप दिया हुआ है जिससे हमें पता चलता है some important ancient places, ऐसे बहुत सारे important ancient places है। तो आप देख सकते हो अपने कैमरा में और अपने फ़ोन में, ये पूरा का पूरा इंडिया का मैप बताया गया है इसमें, और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट एंशिएंट प्लेसेस है वो सारे एंशिएंट प्लेसेस के नाम लिखे गए हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो यू शुड हैव टू रीड दिस वन बिकॉज दिस वन इज़ वेरी मच एसेंशियल। सी, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ मैप के रिलेटेड स्टूडेंट्स।
सी जो रेड कलर के जो जितने भी साइन है, जैसे कि ये है केव्स है, देन ये है भीमबेटका, जितने भी रेड कलर्स के हैं वो सारे हैं पॉलियोलिथिक प्लेसेस, और जितने भी ग्रीन कलर के हैं वो है लियोथिक प्लेसेस। जितने सर्कल है वो है चैल्कोलिथिक प्लेस, और जो डायमंड जैसे है वो इनिशियल विलेजेस है। ये सारे इनिशियल विलेजेस है ऐसे साइन वाले, ठीक है। और जिसमें स्टार दिए हुए हैं वो क्या है, मॉडर्न सिटी, जैसे कि कोलकाता। आप देख सकते हो कोलकाता इज़ द मॉडर्न सिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वन यू कैन find out the places in this map. Okay students, that should be good enough to understand it. Now let's see the next part. So students, we have already looked the map. Now we will see this one. You will find that at many places of India the primitive men might have lived. Few places are shown in the map, but there are evidence of their habitat in many places in India. So students, हमने जो ये अभी ये मैप देखा उसमें ऐसा बताया गया है कि जहाँ जहाँ पे प्रिमिटिव मैन रहते थे, और ऐसे बहुत सारे प्लेसेस भी बताए गए हैं इस मैप में कि जहाँ पे वो लोग रहते थे और अपने सेटल थे वहाँ पे स्टूडेंट्स। और ऐसे एविडेंस भी दिए गए पाए गए हैं कि जहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस में इंडिया में वो लोग के एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पे डेफिनेटली प्रिमिटिव मैन्स रहे थे स्टूडेंट्स। ओके, दे प्रिफर्ड टू स्टे इन गुड एंड लार्ज प्लेसेस वेयर स्टोन्स, वुड एंड वाटर वेयर फाउंड. They lived in natural caves to protect themselves from rain and wild animals. Several such places have been found in Vindhya mountains in central India. Such type of places have been found in the region around Narmada river. Bhimbhatka, Madhya Pradesh has been found, which was an excellent place of human habitation. In its caves near about 500 images of birds, deer, wooden spear, trees, humans, etc. drawn by the primitive men have been found, which are drawn with the help of natural colors. So students, what happened कि जो जो प्लेसेस अच्छी थी और जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी जहाँ पे स्टोन्स और वुड और पानी पाया गया था वहाँ पे ही प्रिमिटिव मेंस रहते थे। कब? जब बारिश होती थी या फिर कोई वाइल्ड एनिमल्स से उनको बचना था. If they wanted to protect themselves, they just went to these places where the stones and wood and water were available, students. Several such type places are there. There was विद्या माउंटेन्स जो सेंट्रल इंडिया में है. वहाँ पे नर्मदा नदी के वहाँ पे एक गुफा है, आप बोल सकते हो भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है. वहाँ पे ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिले हैं जहाँ पे वो केव है. एक्चुअली ये जो भीमबेटका है वो एक केव से गुफा है. वहाँ पे 500 पिक्चर्स इमेजेस मिले हैं बर्ड्स, डियर और वुडन स्पीयर, ट्रीज और ह्यूमंस के, जो प्रिमिटिव मैन ने ड्रॉ किए हैं उस टाइम में. और वो सब चीज़ें हमें अब पता चल रहा है जब आर्कोलॉजिस्ट और आर्थ्रोपोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने फाइंड आउट किया था. और विच आर ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल कलर्स. जो नेचुरल कलर्स है उससे वो सारी चीज़ें ड्रॉ की हुई है. मतलब ऐसे 500 इमेजेस वहाँ पे ड्रॉ की है. तो वो ड्रॉ किसने की है स्टूडेंट्स? प्रिमिटिव मैन ने ड्रॉ की है स्टूडेंट्स. दैट इज़ सो मच अमेजिंग, राइट? अमेजिंग, दैट इज़ अमेजिंग. क्योंकि एट दैट टाइम दे डजंट नो हाउ टू ड्रॉ इट, बट रेदर देन दे ड्रॉ इट ऑल दैट pictures, students, of birds, deer, wooden spear, trees and humans. That is very much gorgeous. So if you wanted to know that, must visit Bhimbetka, Madhya Pradesh, okay, near the Narmada Radi, students. Okay, so now let's see the next third page. So third page
is all about, see, you can see in the screen over here, this one is the cave of भीमबेटका. ये है केव भीमबेटका का, मतलब यहाँ पे प्रिमिटिव मैन रहते थे जब वो अपने आप को बचाना चाहते थे वाइल्ड एनिमल्स या फिर रेन के थ्रू. तो इसमें 500 इमेजेस है बर्ड्स और सारे एनिमल्स के जो प्रिमिटिव मैन ने नेचुरल कलर से बनाया गया है, ड्रॉ किया था स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. डिस्कवरी ऑफ फायर एंड व्हील एंड देयर यूजेस, मतलब कब फायर की डिस्कवरी हुई, व्हील्स मतलब पहिया की डिस्कवरी हुई, और उसके क्या क्या यूजेस है स्टूडेंट्स. ओके, वी विल सी दैट वन. Ruins of ashes found in the caves of the primitive man in Kurnool in South India indicate that they were familiar with fire. As per historians, approximately 11,000 years ago, humans started using fire. Use of fire had revolutionized their life because with the help of it, they could cook the meat and eat, get light and protect themselves from wild animals. Other than fire, wheel also revolutionized their life. They learned to make wheel from tree trunk and thick wood. So students, in this topic discovery of fire and wheel and their uses, ऐसे प्रिमिटिव मैन, एक जगह है साउथ इंडिया में कुरनूल करके, वहाँ पे एशेस मिले, मतलब राख मिली, जो फायर की जो राख होती है ना, वो मिली है केव्स के अंदर में स्टूडेंट्स. तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग आग के बारे में जानते थे. दे वर वेरी मच फेमिलियर विद द फायर. एंड एज पर हिस्टोरियंस, अप्रोक्सीमेटली 11,000 years ago ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग फायर, मतलब 11,000 years पहले ह्यूमन्स ने स्टार्ट किया है फायर यूज़ करना स्टूडेंट्स. सो यूज़ ऑफ फायर वॉज वेरी मच हेल्पफुल फॉर देयर लाइफ, मतलब वो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, और मीट कुक करने में काम आता था, खाने में काम आता था, क्योंकि वो मीट को कुक करेंगे और फिर खाते थे, लाइट मिलती थी उनको, और वो वाइल्ड एनिमल्स से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते थे स्टूडेंट्स. देन और जो फायर के बारे में हमारी बात है, अब व्हील के बारे में बात करते हैं, चक्का, पहिया जिसको आप बोल सकते हो. दैट वॉज इन्वेंटेड बाय द प्रिमिटिव मैन ऑल्सो, एंड दे हैव लर्नड टू मेक व्हील विद द हेल्प ऑफ ट्री ट्रंक एंड थिक वुड, मतलब वुड और ट्री ट्रंक के थ्रू उन्होंने व्हील बनाना सीख लिया था कि किस तरह से व्हील बन सकता है स्टूडेंट्स. सो उन्होंने ईजिली सीख लिया था. सो दिस वन इज डिस्कस. सो ये हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट्स. इवन टुडे इज इट पॉसिबल टू थिंक अबाउट आवर लाइफ विदाउट फायर? नो स्टूडेंट्स, विदाउट फायर वी वॉन्ट इमेजिन आवर लाइफ राइट नाउ और डेज, मतलब अभी के टाइम में विदाउट फायर हम लोग अपनी लाइफ जी ही नहीं सकते हैं. फायर नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो हम लोग खाएंगे कैसे, राइट स्टूडेंट्स. सो फायर इज़ वेरी मच एसेंशियल, इज़ एन इम्पॉर्टेंट. Second, initially, discovery of wheel would have brought which changes in human life? A lot of changes have been in while the discovery of wheel. मतलब फॉर एग्जाम्पल व्हील डिस्कवर हुआ है, तो अभी के टाइम में आप बोल सकते हो बेटा, विद द हेल्प ऑफ द व्हील्स वी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल बाईसाइकिल, then motorcycle, then cars. So with the help of the wheels, we go from one place to another in a short period of time, right students? So wheel is having a very important invention. So both we can say fire and wheel, both are having a very important part in our whole life students. So students, we can say that fire and wheel and its uses is very much essential in the life of our human beings, obviously students, right? So this were the whole topic about the primitive man students, how that have been occupied students,
Okay, so now I will wrap it out my video, and in the next video we will discuss about the changing environment and the next topic of this chapter. Then after this chapter would be completed, students. Okay, so students, you have the textbook, so you should have to read this chapter one or twice time, and that is your homework, students. Okay, so I hope that you have understand it about the primitive man and its lifestyle. So if you have any doubt, so you just comment me down below. Okay, students, so till then I will see you in the next video with a very lot of knowledge about the primitive man and the settled life of the primitive men like us. Okay, students, so if you have liked my video, students, so you should have to do three things, and that is like, share and subscribe, students. Subscribe it my channel, students, because I am very much eager to know it and give you a lot of knowledge, students. So till there, bye bye, students, and have a nice day. Stay home, stay safe, and with the help of this line I would like to pack up. Bye bye, students.